ओम गंगी च मणि च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु गुरुद्र गंगा प्रवासे कृष्ण एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्थानकळमे विष्णु पुण्य श्रावण शुक्ल पक्षिकादस्यां मंगलवासरे ज्येष्ठा वृश्चिकराशौ श्रीचन्द्रमासे शुभे स्थिते कर्के श्रीभास्करे चाद्य देवारिकाटनी स्थिते काटानी मंडले सस्य संन्यास्य आश्रम सद्गुरोः गोळन्त्रा गौतम गोत्री कैलासलोचनात्मकः दुर्गा प्रसादमासाद्य कनकेश्वर कृपया करिष्येऽहमभिषेकमारत्रिकं च तर्पण कनकेश बुद्धिशाभ्यं ते वरिग्राम सद्गुरोः जगन्नाथ परं च श्रीहरिहरात्मकांसतः श्यामसुन्दर पितृषि विश्वम्भरानुजांसिनः जयदासरथिभ्यं च नारायणसुवैष्णवः ईशानश्रीकराभ्यं च माधवंशस्वरूपिण कृष्णकैलासदत्तेन वैद्यगोपीसभासुधाः विघ्नेश्वरोऽपि दत्ताय नृसिंहाग्रजरूपिणा श्रीराम भीम कैलासा गोपीनाथ सुतादयः श्रीराम स्वपितृपिण्डाय श्रीभीम वासुदेवाय श्रीरामांसरक्षायैव मनोज भीमज सुताः दण्डपाणिकृपा सिन्धुः श्यामसुन्दरवंशिनः श्रीकरस्य महालक्ष्मी श्रीजय सरस्वती गोपीनाथस्य चन्द्रमण्या वासुदेवरेखया नरसिंहसनीला वै श्रीरामोषितया पुनः श्रीभीमस्य हेमलतास्ति दण्डपाणिश्च कमला पितामह पितामहीनामस्तु श्रीहरिकृपा वैकुण्ठे वसतिरस्तु चिरकालिकरूपिणा भरद्वाजीयगोत्रेण मातृकुलस्य पितरः राधाचरण वैदेही वनमालिश्च मुक्तया श्रीगणेशमतिभ्यं वैद्यसुवर्ण्यति प्रिय भरत कृष्ण भीमिश्चार्जुन मधु त्रिलोचन सुनपद्मवती कुन्तुषा वासन्ती च चञ्चलः जगन्नाथ सरस्वत्या हृषिकेश सुरोमय रजनीकान्तपितॄणामस्तु वैकुण्ठवासतिः मदातृपितॄणामस्तु तथैव चिरकालिकम्। अथ श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अयोध्याकाण्डः सप्तत्रिंशः सर्गः। महामात्रावच श्रुत्वा रामदशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यं तो विनयज्ञो विनीतवत् त्यक्तभोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवितः किङ्कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः यो हि दत्त्वा द्विवश्रेष्ठं कक्षायं कुरुते मम रजोस्नेहेन किं तस्य त्यजत कुञ्जरोत्तमं तथा मम सतं श्रेष्ठ किं ध्वजिन्याजा जगत्पते सर्वाण्येवानुजानामि वीराग्ये वीराभिवानयन्तु मे सुखनिद्रापीठके चोभे समानाय गच्छता चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वसतु मम अथ चिराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् उवाच परिधस्वेति जनोघे निरपत्रपा सचिरे पुरुषाव्याघ्र कैकेय्यः प्रतिगृह्यते सूक्ष्मवस्त्रमवक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्ताः लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः अथात्मपरिधानार्थं सीताकौशल्यवासिनी सम्प्रेक्ष्य चिरं सन्त्रस्ता पृषति वागुरामिव साव्यपत्रपमाणिव प्रगृह्य च सदूर्मनः कैकेय्या कुशचिरं ते चिरेते जानकी शुभलक्षणः अश्रुसम्पूर्णनेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गन्धर्वराजप्रतिमं भर्तारमिदमब्रवीत् कथं नु चिरं बध्नान्ति मुनयो वनवासिनः इति ह्यकुशला सीता सा मुहुर्मुहुः कृतकण्ठे श्मशा शिरमेकमादाय पाणिना तस्तु ह्यकौशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा तस्या तद्क्षिप्रमागत्य रामो धर्मभृतां वरः
चिरं बबन्ध सीताया कौशयशुपरि स्वयं रामं प्रेक्ष्य तु सीताया बन्धनं चिरमुत्तमम् अन्तःपुरचरानार्यो मुमुचुर्वारिनेत्रजम् ऊचुश्च परमायत्ता रामं ज्वालिततेजसं गच्छन्नैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य बीजनं वनं तावद्दर्शनमस्यं न सफलं भवतु प्रभो लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक नेयमर्हति कल्याणे वस्तुं तापसवदवने कुरु नोपायाचनं पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्मनित्यः स्वयं स्यास्तातुं न हीदानीं त्वमीच्छसि तासामेव विधानवाच शृण्वन् दशरथात्मजः बन्धैव तदा चिरं सीतया तुल्यशीलया चिरे गृहीते तु तया सवास्पो नृपते गुरुः निर्वाज्य सीतं कैकेयी वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसिनी वञ्चयित च राजानं न प्रमाणे अवतिष्ठसि न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शिलबर्तिजे अनुष्ठास्यते रामस्य सीता प्रकृतमासनम् आत्मा हि दारा सर्वेषां दारसङ्ग्रहवर्तिनाम् आत्मीयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम् अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण सङ्गता वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति अन्तपालश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः सोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छदं भरतश्च शत्रुघ्न चिरवासा वनेचरः वने वसन्तकाकुत्स्थ मनुवस्यति पूर्वजं ततः शून्यं गतजन्मं वसुधं पादपैः सह त्वमेका साधि दुर्वृत्ता व्रजानामहिते स्थिता न हि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः तद्वानं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवस्यति न ह्यदत्तं महीं पित्रा भरतः शास्तुमर्हति त्वयि पुत्रवद्वस्तुं यदि जातो महीपते यद्यपि त्वं क्षितितलात् गगनं चोत्पश्यति पितृवंशचरित्रज्ञः स्वन्यथा न करिष्यति तत्त्वया पुत्रगार्धिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियं लोके न हि स विद्येत जो न राममनुव्रतः यक्षस्य ये अद्यैव कैकेयी पशुव्यालमृगद्विजान् गच्छता सह रामेण पादपाश्च तदनुमुखात् अथोत्तसान्याभरणानि देवी देहि स्नुषायै व्यपनीयचिरं न चिरमस्या प्रबधीयतेति न्यवारयत्तन्वसनं वसिष्ठ एकस्य रामस्य वने निवास स्तुया वृतकेकया राजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्मनित्या वसत्तरान्येषः राघवेण यानैश्च मुख्यैः परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैर्विधानि रणेयं वृता ते वरसम्प्रदाने तस्मिन् तथा च पतिभिः प्रमुखे गुरो नृपस्य प्रतिमा प्रभावे नैवं स्म सीता विनिवृत्तभावा प्रियस्य भर्तु प्रतिकारकामा इत्यस्य श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 37 सर्गः देवरी सन्यासी सुखाश्रमाष्टकम् तेजसा सुखमायाति सुखात् ऊर्जा समुद्भवा तद ऊर्जात् कृतकार्य स्यायाति सिद्धिरमृता बन्धन्ति च तपस्वीश्वरा चात्र स्वते तपसा वरणीयं च तत्कर्म यत् लोकमङ्गलाय यत् रीतिनीति विनिर्मुक्तं तपोकर्म न संगतं
रीत्यानुसारमप्यस्तु नित्यानुजायिनं खलु संस्कारेण यथा बुद्धि चिररीत्यानुकूलता संस्कारहीनमत्या तु नित्यया नित्ये न मानिता न्यायधर्मगतं कर्म नियते स्वस्थजीवनं न्यायधर्मविनेवास्ति तत्कर्म नरकजीवनं सीता यथा पतिर्धर्मे बल्कलधारिणी गता सीतेव संयमाना अत्र कलु धर्मविरोधिनी सुखाय इच्छा यथा काम्यो तथैव यततां नरः सम्यग् न्यासकरणीयो यथा मत्यं न कल्मषः खाद्यं पेयं यथा चोष्यं लेयं च भोजनाश्रितं चर्वणेन यथा सन्तिः तथैवास्तु त्रयेष्वपि तेवरिग्राममागत्य खेरदायितपोस्थलम् आश्रमसुखमात्मानं यथा दत्तं तथैव च चाष्टकेनामनमप्यत्र सन्न्यासी धर्मविषयं क्रमानुसारमत्रैव विलिख्य अर्पयामि च। हरि ओम्। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलावरणं कमालम् अङ्गे कृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुकुदा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमातपा प्रणिहितानि गतानि मालाधुर्मधुकरीव मुहोत्मलेय स्वामीशेषु सागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदवी भ्रमदानदैक्य मानन्दहेतुरधिकं मुरभिर्निशोऽपि ईशानिशीलतु मयि क्षणमीक्षणात् मिन्देवरोदरसहोदरमिन्दिराय आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्मनेत्रं भूतिर्भवेन्मम भुजङ्गशयङ्गनाय बाह्वन्तरे मधुरितासितकौस्तुभेज हारावलेव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटैक्यमाला कल्याणमाभवतु मे कमलालयाय कालाम्बुदालिललितोर्षिकैष्ठवारे धाराधरे स्फुरतिजातडिजङ्गनेव मातु समस्तजगतं महनीयं निर्भद्राणि मे सौभार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल जत्प्रभावन् माङ्गल्यवाजमुजुमातिनिमन्मनेन मज्जामने मन्तरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्चमकरालयकन्यकाय दद्यादयानुपमनोद्रविणम्बुधार मस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशोभिषानि दुःखर्मकर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनम्बुवाः इष्टाभिशिष्टमदयोऽपि जयः जयात् दृष्ट्या द्रिवेणमवदं सुलभं लभन्ते दृष्टे प्रपुष्टकमलोदरदीप्तिरीष्ट पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करभीष्टराय गिर्जेवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति सायकं मरीयसि शेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तसे नमस्त्रिभुवनेकगुरुस्तरूणि श्रुते नमस्तु सुखकर्मफलप्रसूते रते नमस्तु रमणीयगुणान्नवाय शक्ते नमस्तपदनिकेतनाय पुष्टे नमस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमस्तु नालिकनिभाननाय नमस्तु दुग्धोजन्मभूते नमस्तु सोमामृतसुधराय नमस्तु नारायणवल्लभाय सम्पद्गजगणेन्द्रियनन्दनानि सम्प्रदं सुरोर्हाय कीर्तबन्धुतारुण्य मामे मदगणोपासना विधिशवनमनशिष्टं हरिहृदमने सरस्वतीन सर्वधवलतम सुगन्धमलि सौभगत्यारि वलयमन्य त्रिभुवनबुद्धिमय दिग्दत्तिवि कनकमं कावदशोभन प्रातर्नमामि जगतं जननीं शेषलोकनाथ गुरुणं कमले कमले केवले वेदं करुणापूर्वतरङ्गरावलोकमयं किञ्चनानपदं पादं कृष्णजय सुबन्धे त्रयिमि त्रिगुणधरं गणेकगुरुतरभाग्यवेगं भवन्ति भविबुधवाद शोभनधरतुसंग्रहं त्रिजन्मजपनेतं सुखवैरगुणम् इति श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितकर्णधरतुसम्पन्नं शङ्करशङ्कराप्तं नमो नमः गुरुर्
ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युमिषमां नमो नमोऽस्तुभ्यस्वराय नमो नमोऽस्तुभ्यस्वराय नमो नमोऽस्तुभ्यस्वराय नमो नमः केदारेश्वराय नमो नमः विश्वेश्वराय नमो नमः सोमेश्वराय नमो नमः नागेश्वराय नमो नमः त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः भीमशंकराय नमो नमः कृष्णेश्वराय नमो नर्मदा कृष्णेश्वराय ओम नमो नर्मदा नमो नर्मदा ओंकारेश्वराय नमो नमः महाकालेश्वराय नमो नमः वैद्यनाथाय नमो नमः मल्लिकार्जुनाय नमो नमः रामेश्वराय नमो नमः लिंगराजाय नमो नमः लोकनाथाय नमो नमः ईशानेश्वराय नमो नमः संदेश्वराय नमो नमः गोकर्णेश्वराय नमो नमः ब्रह्मेश्वराय नमो नमः कपिलेश्वराय नमो नमः गुप्तेश्वराय नमो नमः गंगाधराय ओम गंगाधराय ओम हर हर गंगे 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 ओम नमो नर्मदा तेवरी ईश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः तेवरी सन्यासी आश्रमस्थ ईश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा विश्व कल्याणकारकाय नमो नमः हरि ओम उग्रं वीरं महावीरवातामृगं नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युं नमामि ओम उग्रं वीरं महारवातामृगं नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युं नमामि ओम नृसिंहाय नमो नमः ओम नमः भगवते वासुदेवाय बालाजी नारायण बालाय नारायण ओम रंग नामाय नमः रंग नामाय नमः रंग नामाय नमः रंग नामं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यूयं प्रचोदयात् गायत्रीं नमो नमः गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् गंगा प्रभवतु एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्नानगणं गंगादि सप्तमातृकादेव नमो नमः गंगादि सप्तमातृकादेव नमो नमः हरि ओम ओम दुम दुर्गाय नमः दुम दुर्गाय नमः दुम दुर्गाय नमः ओम कर्णधाराय नमः कर्णधाराय नमः कर्णधाराय नमो नमः ओम पावकान सरस्वती वाजे वाजे जगयं प्रज्ञावसं सरस्वती नमो नमः या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला या शोभ्र वस्त्रांकृता या वेण्याभिराण मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत सुंदर प्रकृति सदा वंदिता सामां पाद सरस्वती भगवती नितेश जगतिं पहा सरस्वती नमो नमः हरि ओम सिंह सीताय नमो नमः सिंह सीताय नमो नमः सिंह सीताय नमो नमः ओम रंगराधाय नमो रंगराधाय नमो रंगराधाय नमो संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुतं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं ओम नीलाचलनिवासं नित्याय परमात्मने बलवदे जगन्नाथाय नमो जगन्नाथाय नमो जगन्नाथं बद्री विशालाय नमो नमः हरि ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु जगत तुम्हें विद्या तुम्हें वो सर्व मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् श्री गुरु चरणाभ्यां नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो पितृपुरुषेभ्यो नमो नमः सर्वे पितृप्रसन्नगत सोष्ठ पुण्यवणं वैकुण्ठं प्रतिदर्शनं श्री गुरु चरणाभ्यां नमो नमः श्री हरि नारायण नमो नमः श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः सर्वेषां मंगलं गुरुप्रभु श्री हरि नारायण नमस्ते गुरुडारूढे कोळासुर भयंकर श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नमस्ते गुरुडारूढे कोळासुर भयंकरी नमो नमः श्री हरि नारायण नमस्ते गुरुनारूढे कोळासुर श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नमो नारायण नमस्ते ओम नमो नारायण नमस्ते गुरुचरणाभ्यां नमो नमो नमस्ते गुरुडारूढे कोळासुर भयंकरी